Hello friends, good morning, good afternoon and good evening. Welcome to Synapse Academy. Jai Hind, Vande Mataram. Friends, million dollar question. How to write a good answer? I would say great answer. आज ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ how the toppers have written the answers. This year topper OCS 2022 Shwetashree Mahapatra. She was our mains test series student. आज ଆମେ ତାଙ୍କର answer copy discussion କରିବା କି ସେ କେମିତି answer ଲେଖିଛନ୍ତି and ଆପଣ ମାନେ ସେ style of writing କଣ ଶିଖି ପାରିବେ ଠିକ ଅଛି each individual point ଆପଣ discuss କରିବି and a point by this session at the end of this session ଆପଣ ମାନେ ଜାଣି ପାରିବେ କି କେମିତି answer ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ definitely ଆପଣ ଜାଣି ପାରିବେ okay नेक्स्ट लास्ट ईयर टॉपर जीतले ओसीएस 2021 सुदेव कुमार पुष्टि तांकर आंसर कॉपी हम ऑलरेडी डिस्कस करथिले ओके तो बोथ जो टॉपर ओसीएस 2021 2022 बोथ आर आवर टेस्ट स्टूडेंट्स एंड तांकर आंसर कॉपी हम देखियो कि हाउ दे राइट आंसर से मानकर आंसर रे कोन एक्स्ट्रा अछि जोटा कि हमें हम आंसर रे नै कि लिखि परिबा जोतरे कि हम अधिक मार्क पाई परिबा सेटा ही हमें सिखिबा ओके ठीक अछि सो लेट अस स्टार्ट दिस वाज द आंसर कॉपी ऑफ श्वेताश्री Test 1 Modern Indian History 30th November 2023 okay first test so just a minute okay so no I think this is the answer booklet okay and this is the Modern Indian History Test 1 okay this is the answer okay we'll discuss that before that let us discuss the question first kon question thila and how she has written this see answer writing gote basic tinet hochi gote basic approach hochi first understand the question properly mu kahi ki eta कहूची ame question ta पढ़िबा and जानिबा how Shwetashree has addressed each part of the question ठीक अछि so first let us read the question. The question is examine critically the various facets of economic policies of the British in India from mid 18th century till independence. Okay, mid 18th century 1750 onwards till independence. How British were continuing their economic policies in India. So what are the key words in this question? You should know the keywords, otherwise you cannot answer a question. First keyword is examine critically. You should know what do you mean by critically examine. You have to go for both positive aspect and negative aspect. Second keyword in the question, various facets of economic policy. Okay, economic policy ro various facets students write it in two ways. ठीक अछि आपण लिखि परिबे फेजेस ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी ठीक अछि मु कहबी फर्स्ट फेज वाज मर्केंटिलिस्ट फेज जोटा कि स्टार्ट हला 1757 रो 1813 1757 बैटल ऑफ प्लासी देन 1813 चार्टर एक्ट तो सेही भितर गोटे इंपोर्टेंट फेज दैट टाक जे मर्केंटिलिस्ट फेज ठीक अछि देन 1813 to 1858 that is called as mercantile capitalism phase 1813 charter act to 1858 ଆମର ସିପୋଇ म्यूटिनी ପରେ सो ए फेज टाको मर्केंटाइल कैपिटलिस्ट फेज कह जाए एंड थर्ड फेज वाज 1858 onwards till 1947 इंडिपेंडेंस पर्यंत that is called as financial capitalism phase ठीक अछि सो these are the three phases of economic policies of British आमे आंसर एमती अप्रोच करि परिबा किंबा इंडिविजुअल अप्रोच करि परिबा हाउ एग्रीकल्चर वाज अफेक्टेड हाउ इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज अफेक्टेड हाउ traditional handicraft industry was affected सेमिति भी देखि परिबा so these are the various facet second part of the question economic policy हम जानले from mid 18th century till independence so there are three important parts of this question and how she has addressed all parts in her answers okay in her answer let us discuss first is introduction let me erase this okay first is introduction yes in introduction she has written that I am reading very slowly just listen British authorities undertook several economic policies from mid 18th century till independence to serve their own interest of subjugating India and creating wealth for Britain very simple sentence and this
describes the aim of economic policies of India of British in India. जे British माने economic policy रो aim थिला British मानकर कि Indian subjugation and that will serve interest of Britain. Okay, this is the very short introduction. Learning number 1, your introduction should be very short. It should not be long. Okay, your introduction should be very short introduction. Point number 1, short introduction. ओके ठीक अच्छे चलो नेक्स्ट लर्निंग आमे सबू शिखी शिखी जिबा केमती आपण माने आंसर लिखिबे ओके वी विल लर्न एवरीथिंग सो ओके ठीक अच्छे नेक्स्ट what are the various facets so she has written the aspects the individual sectors केमती affect कला trade केमती affect कला agriculture केमती affect कला that is also another way of writing this answer okay ठीक अच्छे so first is mercantile capitalism तो mercantile capitalism रे हेला कोन it was monopoly over Indian trade to directly take control over the government revenues through control over the state power so mercantile capitalism माने आमे कोन करूचे we are promoting that means British were promoting trade their trade free trade practice ସେମାନେ କରୁଥିଲେ ଯେମିତି କି British goods ଆସିକି Indian market ରେ ପସିବ ठीक अछि okay so this was a practice of trade favoritism okay by creating certain policies जोटा कि सेମାନଙ୍କୁ फेवर करिवो आ इंडियन मानको डिसफेवर करिवो ठीक अछि okay second point second exorbitant taxes and revenues tax बहुत थला okay revenue बहुत इनकम होतला सेमानकर हाई टैक्सेशन थला जोटा कि दैट वाज इनटॉलरेबल फॉर इंडियंस ओके स्पेशली को सेक्शन मानको पई फार्मर्स tenants and landlords had to pay extremely high revenues other revenues include salt tax थला house tax थला ए सब जिंस थला ठीक अछि सो माने this a point रे what she has done she has given some examples जे जो टैक्सेशन थिला ना हम खाली लिखिदो हाई टैक्सेशन थिला बट एग्जांपल कोन थिला सॉल्ट टैक्स थिला हाउस टैक्स थिला फार्मर्स टेनेंट्स लैंडलॉर्ड एमा समस्त पय टैक्सेशन थिला ठीक अछि सो गोटे पॉइंट को हम एक्सप्लेन करले एंड सब्सटेंशिएट करले एग्जांपल देखि थर्ड पॉइंट देयर इज वन वे फ्री ट्रेड दैट मींस देयर आर restriction for Indian goods and there is free trade arrangement for British goods the raw materials were exported from India and the finished products were imported to penetrate Indian markets. Example, cheap British cloth flooded Indian markets. Okay, points are very short, well explained and examples are given. Okay, ठीक है. Third point, next point, fourth point. Fourth point is commercialization of Indian agriculture. How British commercialized the Indian agricultural system by introduction of cash crops. What are the examples of cash crops? Cash crops like tea, coffee, jute, cotton, indigo. You know indigo revolt because of forcible indigo cultivation were introduced that at times led to droughts and famines. Okay. जेहेतु कैश क्रॉप इंट्रोडक्शन हला फोर्सिबल इंट्रोडक्शन ऑफ द कैश क्रॉप्स इंडियन फार्मर्स वर फोर्स्ड बाय ब्रिटिश टू गो फॉर द कैश क्रॉप्स सेथि पई कोन हला ए कैश क्रॉप पई ड्रॉट्स हला फामिन्स हला ठीक अछि ओके नेक्स्ट पॉइंट डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कांसेप्ट कोन फ्रेंड्स डी इंडस्ट्रियलाइजेशन माने होची हमर ट्रेडिशनल इंडस्ट्री जहा जा थिला ठीक अछि हमर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थिला विलेज इंडस्ट्री कॉटेज इंडस्ट्री जहा भी थिला सो ऑल दीज वर ruined that led to deindustrialization so deindustrialization was loss of traditional livelihood without any altering without any focus on the process of industrialization that means traditional livelihood are destroyed and there are no creation of any additional industries किछि इंडस्ट्री क्रिएट हलानी केवल ट्रेडिशनल इंडस्ट्री जहा थला ताकू ब्रिटिश डिस्ट्रॉय करके छाड़ दे दैट इज द प्रोसेस ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ओके देन growth of railways to increase the connectivity railway favored the British goods to penetrate the Indian markets to hinterlands to serve the Britain purpose of reaching hinterland and creating markets for their goods so Indian railway favored the British goods to reach the hinterland in the India okay ठीक अछि
So Indian hinterlands were penetrated by British goods by the help of railways. ठीक अछि. Then this was the facets of economic policies. But answer पचारथिला कोन critically evaluate. Okay, examine critically examine. So critically examine को address करिया पाई what she has written, what were the upside of the British economic policies. तो British economic policy जो थिला तार upside कोन थिला. Okay, upside कोन जदिओ indirectly British policies ruined the Indian industry and devastated the existing economy in India, but किछि किछि एस्पेक्ट ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी हमको हेल्प करछि. कोन हेल्प करछि? फर्स्ट, थ्रो दो इनडायरेक्टली दिस पॉलिसीज हेल्प इंडियंस इन द फॉर्म ऑफ को हिसाब रे से हेल्प ब्रिटिश पॉलिसी हेल्प करछि. फर्स्ट होछि नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर. ब्रिटेन रो नॉलेज आसला, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हला. दैट वाज वन एस्पेक्ट. Increase in connectivity helped Indians to unite and mobilize. Very, very important thing. Because of development of railways served as a mean to unite Indians. जो माने hinterland रे थिले, rural area थिले, से माने railway को यूज करिके से माने mobilize हे पारले, mass mobilization हे पारला. Okay, then upper middle class and educated individuals got opportunities to set up business and industries. Yes, that was also very important कि ब्रिटिश रो जो पॉलिसी को काउंटर करिया पई जो माने एजुकेटेड थिले, इंटेलिजेंसिया थिले, से माने भी स्टार्ट कले जे आमे भी निजे निजे इंडस्ट्री तयारी करिवा. ठीक अछि. So that has also helped British economic policy jogu. In a reaction to those economic policies, this started that business by individuals in India. Okay, ठीक अछि. So these were the few positives. Then she wrote a very balanced conclusion that however the economic policies in long run proved to be disastrous for India. That can be seen through how it proved to be disastrous in India. That can be seen through rampant poverty, joblessness, illiteracy during the independence. जेतबे हम independent पाइले सेतबे हम poor थिले, illiterate थिले, joblessness थिला, तो economic growth किछि भी नथिला. That is because of this drain of wealth from India to Britain. Okay, then कोन हेतिला? फर्स्ट हमर ओडिसा रे गोटे famine हेतिला. So famines killing lakhs of Indians. Example, Odisha famine, Bengal famine. Okay, then late start of industrial revolution in India. माने industrial sector आमे कहवा एपर्यंत भी आमे तापर फोकस करि पारि नाही. आमे रिसेंटली स्टार्ट करछे मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया. ओके, ता माने जो ब्रिटिश हमकु जो शॉक देखि जाइछंती, ओके, से शॉक रो बाहरिया बा हमकु केते टाइम लागु छै देखो. ओके, ठीक अछि. See, you have to connect history with the present. And how she has connected history को present सहित केमति connect करछन हम सेकंड आंसर देखिबा. Okay, so let's start up industrial revolution in India. So a conclusion. Hence, India, which had 23% data, see how you can write a very good conclusion. India, which had a 23% share in world economy in the beginning of 18th century, only 3% share of world economy at the time of independence. End of answer. So friends, what we learned from this answer? First, it is the flow of the answer which is extremely important. Okay, a answer रे आपण मानन कोठी बोर लागिबोनी. Continuously you are reading that. Second, you are breaking down the answer. Okay, introduction, body, conclusion, and you are clear that what I am going to write in body part, what I am going to write in introduction, and what I am going to write in conclusion. Body part को आपण माने 4 ରୁ 5टा पार्ट रे डिवाइड करछंती. प्रति पॉइंट लिखुछंती, ताको सब्सटेंशिएट करछंती, सेठी एग्जांपल दोछंती. ओके, थर्ड, conclusion रे आपण जहा लिखिले इंट्रोडक्शन ऑफ बॉडी रे ताकू आउ थरे रीइंफोर्स करिया पई आपण किछि भी गोटे डाटा दे पारंती, नले निजर गोटे ओपिनियन भी दे पारंती. ओके, जा फल कि एग्जामिनर भाबियो यस द कैंडिडेट जे कैंडिडेट आंसर लिखिछि से जहा ऊपर लिखिछि एक्जाक्टली सेम जिंस को आउ थरे सब्सटेंशिएट करिया पई तळे कंक्लूजन भी देछि. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ए गुड आंसर. ओके, ठीक अछि. ओके, आ गुड आंसर देखिबा. गुड आंसर इज नॉट सफिशिएंट. आ गुड आंसर देखिबा. ओके,
Please give me some time to erase this. Okay. लास्ट ईयर आम डिस्कस करते ओसीएस 2021 टॉपर सुदेव कुमार पृष्ठ आंसर भी डिस्कस करते सी हैज रिटन आल्सो इन द सेम वे ओके सिमिलर वे रे तांको आंसर भी लिखा है देखंतु ओके ह्यूमन राइट्स क्वेश्चन थिला ह्यूमन राइट रे से गोटे इंट्रोडक्शन लिखछंती देन प्रोविजन कोन कोन अछि इन अ वेरी क्रिस्प एंड कंसाइज मैनर एंड फाइनली कंक्लूजन ओके एनएचआरसी फंक्शंस ऑफ एनएचआरसी सक्सेस एंड challenges solutions futuristic solution okay ठीक अछि so the next go to the second question test series रे कोन पढितला understand this question clearly the partition of India in 1947 was the culmination of long drawn process which started with the suppression of the revolt of 1857 by the British बुझो क्वेश्चन बोल से कोन पचारछि ओके ठीक अछि इंडिया रा पार्टीशन जो हेला 1957 रे से पार्टीशन टा रो मंजी कोट बुना हितला 1857 रिवोल्ट रे बुना हितला ओके एंड 1857 क्वेश्चन पचारुछि जे 1857 प्रोसेस रे कोन 1857 ऑनवर्ड्स कोन कोन स्टार्ट हैला एंड जोटा की जाई कि 1947 ने एंड हैला इंडिया रा पार्टीशन रे ओके सो इतरे बहुत पिला आंसर लिखितले कि इंपोर्टेंट इवेंट्स सब लिखितले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1909 1919 क्रिप्स मिशन कैबिनेट मिशन माउंट मेटल प्लान राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जहां पारले लिखले साइमन कमीशन नो क्वेश्चन पचारुछि कि सिंपल थिंग दैट क्वेश्चन इज आस्किंग हाउ communalism started in revolt of 1857 started after 1857 and what processes कौन कौन इवेंट हला 1857 परे जोटा कि कम्युनलिज्म को आउरी फ्यूल देला बढ़ेला एंड फाइनली सेटा जाई कि इंडिया रा पार्टीशन हला 1947 रे सेही प्रोसेस हमको भाबियो पड़िबो ता माने हमको भाबियो पड़िबो कि कौन कौन इवेंट अछि इंडियन हिस्ट्री आफ्टर 1857 जोटा कि कम्युनलिज्म को बढ़ेइछि कम्युनलिज्म को एग्रावेट करिछि सेटा में देखियो ओके ठीक अछि सो अंडरस्टैंड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली इट इज नॉट दैट कि जहां हमें जानि छै सेटा लिखि दवा ओके वाज द इंटरव्यू ऑफ सोताश्री आल्सो सी आल्सो टोल्ड कि एमते नहीं कि हमें जहां जानि छै सेटा लिखि दवा नो क्वेश्चन कोन पचार छै बुझार अछि देखिबा ये आंसर केम लिखछंती वेरी गुड बहुत बड़ा क्वेश्चन एंड लेट अस सी द आंसर क्वेश्चन बुझी पाले आपण माने आई होप ऑल टू क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू okay so I will highlight something in this answer also the partition of introduction the partition of 1947 was the result of communal tensions she has highlighted the important word communal tensions that existed between Hindus and Muslims of India okay ठीक अछि so the origin of this The origin of these tensions can be traced back to 1857. जहाँ क्वेश्चन पचार से सेठी पळे आसिले ओके 1857 रो आरंभ करछि क्वेश्चन can be traced back to 1857 revolt suppression by British authorities okay through use of their carrot and stick policy you know carrot and stick policy जण को carrot और जण को stick ठीक अछि सो जो carrot and stick policy ब्रिटिश माने देइथिले सेही carrot and stick policy 1857 पाखरु ही स्टार्ट हला पार्टीशन रो मंजी बुना हला से ओके ठीक अछि चलो देन क्वेश्चन पचरा हेतला see the question again see the question long drawn process we started with the suppression of revolt 1857 so what were these processes the processes that led to rise of communalism and partition in 1947 directly hit the question okay the processes first 1857 revolt showed British authorities कौन दिखेला the unity among Indians ब्रिटिश अथॉरिटी माने जानिले कि भाई इंडिया रे जो यूनिटी अछि ताकू जने हमें न भांगीबा ताहले किछि करि परिबा ठीक अछि तो सेति पय ब्रिटिश माने कोन करले ब्रिटिश ट्राई टू फाइंड वेज सी हैज रिटन ट्राई टू फाइंड वेज टू क्रिएट द क्लीवेज अमंग देम फ्रैक्शन क्रिएट करबा तांका भीतर फ्रैक्शनलिज्म क्रिएट करबा एनिमिटी क्रिएट करबा ठीक अछि सो दिस द पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 2
In the latter years of 19th century, it saw British support to Muslim to create Muslim League. Muslim League को support करते British, okay, to counter the Indian National Congress. ସେମାନେ କହିଲେ कि ये गोटे सेफ्टी भाल्व तो ହେଇଥିଲା इंडियन नेशनल कांग्रेस, बट सेफ्टी भाल्व ହେଇକି ଆମକୁ थ्रेट देलानी, तो आ गोटे काम करिया, चलो तैयारी करिया मुस्लिम लीग. ठीक अछि. अच्छा, देन under the government of India Act 1909, जोटा हमें कहूचे Morley Minto reforms, separate electorates were provided to Muslims to create further factions. Okay, further division create करिया पई separate electorate तैयारी हला. सेति पई कोन को आजे father of communal electorate. Okay, चलो. Then next point, the side effects of militant nationalism. जो militant nationalism हला, okay, militant nationalism बा हमें जो कहूचे extremism जोटा हला, तो that example use of गणपति festivals, anti cow slaughter campaign, okay, so एटा कोन हला, एटा भी गोटे faction रे sense create कला कि गोटे division create होछ. Okay, ठीक अछि. तो somehow that also contributed. ठीक अछि. Okay, then शुद्धि movements और purification movement. Okay, तो आर्य समाज शुद्धि movement बा purification movement start कला, तो सेटा भी that was also branded as communal. Okay, that also contributed. 1928 Nehru report rejected by the Muslim League. जिन्ना कहले भाई नेहरू रिपोर्ट हम एक्सेप्ट करिवनी. आफ्टर दैट जिन्ना पुट हिज 14 पॉइंट डिमांड से पुट कले. ठीक अछि. सो 1928 रे नेहरू रिपोर्ट वाज रिजेक्टेड बाय मुस्लिम लीग विथ जिन्ना प्रपोजिंग रिजर्वेशन फॉर मुस्लिम्स इन गवर्नमेंट सर्विसेज लोकल बॉडी. बहुत जिन्ना बहुत प्रपोजल देथिले आफ्टर रिजेक्टिंग द नेहरू रिपोर्ट. 14टा पॉइंट थिला. ठीक अछि. यू ऑल नो जिन्नास 14 पॉइंट डिमांड्स. ओके, देन 1928 परे अगस्त ऑफर इन 1940 प्रोवाइडेड वीटो पावर टू मुस्लिम लीग. ठीक अछि. त माने सबु पॉइंट इज कोरिलेटिंग विथ द कम्युनल थिंग जोटा डेवलप हेज after 1857. Okay, then Cripps mission in 1942 provided a blueprint for India's partition. Okay, provision of separate constitution. The Cripps mission रे ଗୋଟେ blueprint है separate constitution ପାଇଁ. ठीक अछि. Okay, then hence now the conclusion part. तो it is a कौन लिखिले? She started from 1857 revolt and sequentially she described all the events that were responsible for a rise in communalism and ultimately partition. ठीक अछि. So 1857 ने कौन हला, तापरे मुस्लिम लीग को हाउ द ब्रिटिश सपोर्टेड मुस्लिम लीग, देन हाउ द कम्युनल इलेक्टोरेट और सेपरेट इलेक्टोरेट started, separate electorate also contributed in 1909. Then militant nationalism केमती माने हमरो contribute करथिला. Then शुद्धि movement by आर्य समाज केमती contribute कला. How what happened in Nehru report, why Jinnah opposed it and what was the demand of Jinnah. Then August offer रे कौन हला and what happened in Cripps mission. Then ultimately the conclusion. Hence partition of India was a culmination of several events. Yes, the events that described above that took place over time with rise of communalism. So ultimately the answer wants that name the events that were responsible for rise of communalism in India and that ultimately led to the partition. Unfortunately, yes, see, mu कहूଥିଲି ना कि how you connect the history with the present. See, unfortunately the cleavage created by British continues as it can be seen through present relation between India and Pakistan. See, that means आमे हिस्ट्री को आमे कनेक्ट करूचे प्रेजेंट सहित. ओके, सो जो क्लीवेज 1857 स्टार्ट हेची आमे तार लीगेसी एबे भी धरिकी बसचे, बिकॉज द रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज नॉट सो गुड, और आई वुड से एट द पुअरेस्ट, एट द लोएस्ट लेवल एवर इन हिस्ट्री. ठीक अछि. सो दिस इज हाउ द टॉपर्स राइट the answers. Okay, we will discuss many more copies also so that आपण मानकर आंसर राइटिंग आपण बहुत भल से करि परिबे. आपण देखंतु बहुत भल से एमती यदि आपण निजर आंसर को
मॉडिफाई करि परिबे आपन राइटिंग स्टाइल को मॉडिफाई करि परिबे आपन बहुत बढ़िया आंसर लिखिबे सीरियसली आई वुड से आई वुड टेक द नेम ऑफ रैंकर हरिओम शंभु नारायण दास एंड मु तांग इंटरव्यू भी अपलोड करिबी यूट्यूब रे सो ही टोल्ड ए वेरी ब्यूटीफुल थिंग सर आपन लास्ट ईयर सुदेव सर जो कॉपी अपलोड करथिले मु ताको 20 थर 25 थर 30 थर देखिछि just to get the sense of how to write a good answer okay and मु ताको देखिला परे सबकॉन्शियस माइंड रे मोर आसी जाइतला कि मते आंसर एमते लिखियार अछि एंड ताकर आंसर राइटिंग सेमते हेइ गेला अल्टीमेटली सो ए वीडियो देखि आपण माने डेफिनेटली बेनिफिट हेबे एंड वी विल डिस्कस मोर कॉपीज आपण माने खाली हिस्ट्री नै पॉलिटी भी डिस्कस करिया पॉलिटी आंसर से केम लिखछंती इकोनॉमी आंसर केम लिखछन सब डिस्कशन करिया okay and many more rankers also not only rank 1 others also okay so thank you very much for this session and I would thank you all and I would expect that all of you will write brilliant answers in the examination and will be successful in the next attempt okay thank you very much all the very best